Class 9th bio chapter, why do we fall ill? In this chapter we have to study what are the reasons by which we get ill and what are the ways by which we can remain healthy. First of all, we will see the reason of being ill. At times we get ill. So the reason is it may be caused due to the attack of pathogens like virus, bacteria, lack of nutritious diet and lack of public health services. Pathogens, the term pathogen means disease causing organisms, and one more term that is related to it is vector. This vector is different from the vector we have studied in physics, that is vector quantity. Here vector means disease carrying organisms, right? So next slide will tell us about health, the meaning of health. Health is a state of complete physical, mental and social being. हम पहले समझते थे कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस होता है, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हेल्थ. Total health means physical fitness, mental fitness and social being. Means our behavior with our friends, our neighbors should also be healthy. It should not be annoying, it should not be irritating. And what is the meaning of disease? Disease means disturbed is. Any disturbance in the structure or function of any organ or part of body is called disease. Basic conditions for good health. What are the conditions by which we can be healthy for longer period of time and can be always? So proper balanced and nutritious diet, personal hygiene, clean environment and surrounding, healthy air, no pollution in the surrounding. Means we have to stay in those regions where there is less chances of being polluted. Regular exercise is also to be done. Proper rest should be taken and good standard of living and economic status is also required. All the people want to remain healthy, but if their economic condition is not very good, they cannot get proper food, nutritious diet and they can be ill at times. So we have to see the difference between healthy and disease free. Disease means it is only related to our physical health and healthy means it will tell us about physical, mental and social fitness. So it is a state of physical, mental and social well-being. Disease free means it is a state of absence from diseases which is totally related to our physical health. Healthy means it also refers to the individual physical and social environment and disease free refers only to the individual. Healthy means the individual has good health and the disease free means the individual may have good health or poor health. Types of diseases. In this chapter we have to study the types of diseases on the basis of their stay, the stay of the disease, how long they remain in our body. So acute disease means the disease which lasts for only a short period of time is called acute diseases. For example, influenza, that is flu, common cold, it remains in our body for very short period of time. Chronic disease, the disease which lasts for a long period of time is called chronic disease like TB. TB means tuberculosis, cancer and AIDS. So I have written here the full form of bacteria through which we get TB problem. So the bacteria is Mycobacterium tuberculosis. So it is obvious that TB we get from which pathogen? From bacteria. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. The spelling of acquired is ACQU. So here I have to add acquired. U. HIV, human immunodeficiency virus. So this is the virus through which we get AIDS. So we have to study acute disease and chronic disease differences. These diseases are short-term disease. Acute means those disease which remains in our body for very short term of. And these diseases are long-term diseases. Acute diseases comes fast and recovers quickly. जल्दी ठीक भी हो जाता है, जल्दी से आता भी है. And side effects of acute diseases are less. And these diseases recover completely. And we have seen the examples. Chronic disease comes and recovers very slowly. Side effects of these diseases are more because it can affect various body organs of our body. These diseases doesn't recover completely. ये जल्दी से recover भी नहीं होता है. जैसे कैंसर है, टीबी है, जल्दी से ये ठीक नहीं होता है. What are the causes of diseases? There are two causes, immediate and contributory.
Immediate means the organism that enter our body and cause the disease are termed as an immediate cause. जैसे कि जो भी pathogens हमने पढ़े हैं, virus, bacteria, protozoa, fungus, these are the immediate causes because they enter our body and they cause some infection in our body. What are the contributory causes? The secondary factors which let these organisms enter our body are termed as contributory cause. For example, dirty water, contaminated food, improper nourishment, and poor standard of living. If the economic status of any individual is very poor, so his standard of living will also get affected with this. So this may cause disease to in his body. Infectious and non-infectious disease. Infectious means the disease which is spread due to infection by microorganisms are called infectious diseases. When a disease causing organisms enter our body, it causes infections and it multiplies and grows in the body, that is called host. When any pathogens enter in our body is like host body to them, and it multiplies in the host body. For example, tuberculosis. So tuberculosis is chronic disease also and it is infectious disease also. So one example can be put into two type of diseases, infectious disease also and chronic diseases. Tetanus, common cold, AIDS, etc. Non-infectious diseases, the disease which doesn't spread by contact between infected and healthy person. ये infected person के contact में आने से ये spread नहीं होता है. You can get through airborne disease. There are airborne diseases which we get through air. There are waterborne diseases which we get through water. So these are non-infectious diseases like cancer, genetic abnormalities, high blood pressure, etc. Infectious agents can be pathogens, virus, bacteria, fungi, protozoans, worms. We have already studied about these in class 8's microorganism, friends and foe. So the example of the disease which we get from virus are common cold, influenza, dengue fever, AIDS, bacteria, typhoid fever, cholera, tuberculosis, anthrax. Fungi, many common infectious disease, mainly skin diseases, rashes, the dandruff in our scalp, that is also due to fungus. Protozoans, malaria, kalazar, worms, worm infections, that is elephantiasis, है ना? These are caused due to worms. Means of spreading infectious disease. How we get these diseases? Through air or through water, through sexual contact or through animal borne diseases. So the example of airborne diseases, you can be asked, you will be given some options like common cold is airborne disease or waterborne disease or sexual contact disease or animal borne disease. So your answer should be airborne disease. So these are the examples which you have to keep in your mind. Common cold, influenza, measles, tuberculosis. Measles is like chicken pox. There are big rashes on your body. And waterborne disease, cholera, typhoid, hepatitis. Hepatitis word is related to liver infection. Word hepatic is related to liver. So this disease is totally related to liver infection. AIDS, syphilis. Syphilis is also sexual contact disease. And rabies, you know, this is caused due to dog bite. Dog जब काटते हैं तो ये disease आपको हो जाती है. कंजंक्टिवाइटिस, टाइफाइड आपने नाम सुना है. कंजंक्टिवाइटिस कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं. जैसे कंजंक्टिवाइटिस, redness in your eyes due to some infection. So it means conjunctivitis is related to which particular organ? It is related to our eyes. टाइफाइड ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं. So we have to study organ specific and tissue specific manifestations. Diseases causing microbes enter the body by different means and goes to different organs and tissues. वो माइक्रोब्स जो कि नोज के थ्रू एंटर करते हैं और लंग्स में पहुंचते हैं. लंग्स को हम पल्मोनरी ऑर्गन बोलते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. So bacteria which cause tuberculosis of lungs, it will reach to our lungs. So TB is related to which body organ? It is related to our lungs. So it is pulmonary disease. Microbes which enter through the mouth are likely to stay in the gut. The bacteria which causes typhoid or liver. So typhoid is related to which organ? Liver.
bacteria which causes jaundice, virus which causes AIDS enter the body through sexual organs during sexual contact and spreads through the limbs to all part of the body and damages the immune system. ये वायरस जो है जो हमें एड्स कोज करता है ये लिम्फ्स के थ्रू, लिम्फ्स जो है आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा, लिम्फ्स क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये थ्रू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इट एंटर्स टू आवर ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम. अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा तो वी आर प्रोन टू गेट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी ऑर्गन्स. तो इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में भी रखा है, आगे है स्लाइड. वायरस विच कॉजेज जापानीज इंसेफेलाइटिस दैट इज ब्रेन फीवर, इट एंटर्स द बॉडी थ्रू मस्किटो बाइट एंड गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन. ये दिमागी बुखार का नाम आपने सुना होगा, इसे हम जापानीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं. ये ज्यादातर इन्फेंट्स में हो जाता है. तो ये भी किस बॉडी ऑर्गन को इम्पैक्ट कर रहा है, ब्रेन को. सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को ही अफेक्ट करते हैं. एंटीबायोटिक्स क्लास 8 चैप्टर का ही है ये. दीज आर द केमिकल्स मेडिसिन और ड्रग्स दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम माइक्रोब्स. सो दे आर यूज्ड फॉर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. और किसके लिए एंटीबायोटिक, और किसके किसके ऊपर काम करता है, बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, प्रोटोजोआ के ऊपर काम करता है ना. तो ये केमिकल्स है विच किल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये वायरस के ऊपर काम नहीं करता है बिकॉज व्हेन वी टेक एंटीबायोटिक इट ब्रेक्स द सेल वॉल ऑफ द पैथोजेंस and virus do not have any cell wall. How can they, so how can antibiotic work on it? So antibiotics do not work against viral infection as the virus do not have their own biochemical mechanism. It is inactive until and unless it enter in any host body. So it depends upon that of the host body. ये host body के ऊपर depend करता है. जैसे होस्ट बॉडी के ऊपर जाएगा, अंदर जाता है, वैसे ही जो है इन्फेक्शन शुरू कर देता है. So it do not have its own cell wall and antibiotics works by breaking the cell wall of the pathogen. Since virus do not have any cell wall, how can antibiotic works on it? So it do not work against viral infection. वैक्सीन लेनी पड़ती है, जैसे कोरोना में आप देख रहे हो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, क्या काम करेगा, वैक्सीन जब बन जाएगी तो वो आपके लिए काम आएगी. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिक्सिलिन, ये सब आप लेते हैं तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोन इन्फेक्शन, ये लूज मोशन, ये सब ठीक हो जाता है. प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज. पहला काम हमारा ये रहता है डिजीज के इफेक्ट को कम किया जाए. कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग मेडिसिन्स. जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, थोड़ा सा बुखार हुआ हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, कॉम्बीफ्लॉम ले लेते हैं. ये सब क्या है, ये डिजीज के इफेक्ट को कम करेगा. ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक फीवर, पेन, इटीसी. एंड बाय टेकिंग कंप्लीट रेस्ट, रेस्ट भी लेना पड़ता है टू कंजर्व द बॉडीज एनर्जी. जो भी आप फूड ले रहे हैं वो एनर्जी कंजर्व रहे क्योंकि कुछ इन्फेक्शन हो गया है. एंड सेकेंड पॉइंट इज टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज. डिजीज को आपको किल करना है, कैसे, सुटेबल एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी. अगर 2-3 दिन तक बुखार रहता है और आपका ठीक नहीं होता है पैरासीटामोल से, देन यू विल हैव टू गो फॉर सम एंटीबायोटिक एंड पर्टिकुलर ड्रग्स व्हिच विल किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन व्हिच वी स्टडी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. अब आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपको डिजीज होगा ही नहीं, ऐसा आप कुछ मेथड यूज करेंगे. तो जनरल मेथड्स प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे. जैसे आजकल कोरोना में वी डू नॉट गो आउटसाइड विदाउट मास्क, सो वी आर प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब. So we are taking proper care that after coming from outside we do what we do, we wash our hands, है ना, we take bath. So these are the things which we have started doing now after coronavirus spread. So for all airborne microbes we can prevent exposure by avoiding overcrowded places. For waterborne microbes we can prevent exposure by not using contaminated water. जैसे ही कहीं पर भी अगर फ्लड आ जाता है तो वहाँ पे कंटामिनेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो प्रॉब्लम्स कोलेरा वगैरह आएगी जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है वो वहाँ पे आ जाएगी क्योंकि वाटर अब इन्फेक्टेड हो गया है. सो दैट इज वाई इट इज एडवाइज नॉट टू ड्रिंक वाटर विदाउट बॉइलिंग इट और विदाउट फिल्टरिंग इट. बिना फिल्टर किए पानी नहीं पीना है क्योंकि अगर पानी जहाँ से सप्लाई होती है वहीं पे कंटामिनेटेड हो गया है तो यू विल गेट इन्फेक्टेड विद सम प्रॉब्लम्स. So for vector-borne infections, we can prevent exposure by providing a clean environment.
इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, आपका आसपास सराउंडिंग अगर साफ रहेगा तो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं। इसलिए कूलर में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। तो दीज आर द methods which will prevent us from getting infected with any vector borne infections by boosting the immune system। जैसे अभी आप देख रहे हो बहुत सारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके, काढ़ा पी रहे हैं हम, है ना, कोरोनिल, ये पतंजलि का ये आई है टैबलेट, इसको हम ले रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारा हमने करना शुरू कर दिया है ना। सो आवर इम्यून सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स बिकॉज इम्यून सिस्टम एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। It protects from any pathogens which try to invade our body. So strengthening the immune system, it can help in preventing many diseases. So proper nourishment or healthy diet that includes all the necessary nutrients, that is vitamins, mineral, carbohydrate, protein, fat, it is necessary for better functioning of our immune system. So that is why we have to boost the immune system by taking proper care of ourselves. There is one proverb or saying, prevention is better than cure। कोई बीमारी जब हो जाती है हमें उसको क्योर करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप प्रिवेंट करें, ऐसी आप अपनी इन्वायरमेंट को इतना, खुद को इंडिविजुअली खुद को इतना हेल्दी बना लें ताकि आप प्रिवेंट कर पाए किसी भी डिजीज को। बिकॉज इफ यू विल बी इन्फेक्टेड विथ एनी काइंड ऑफ डिजीज, you will have to face physical crisis, you will have to face social crisis, you will have to face mental crisis, and you also have to go through economical crisis। what does it mean? it means कि आप फिजिकली बहुत वीक हो जाएंगे, हो जाते हैं। सोशली भी आपकी क्राइसिस आ जाएगी, बिकॉज नो, वेरी फ्यू पीपल विल कम टू मीट यू, or if there is some infectious disease, very less people would come to meet you and come to see you, how are you, because there are chances that they will get infected। जब कोरोना होता है क्यों उनको आइसोलेट कर देते हैं? because there are chances that they may also get infected with these kind of diseases। so it is better that you should prevent all these kinds of problems। how can you be mentally weak? when you will think about ourselves, when you think about yourself, ki what has happened to me, why it has happened to me, how will I get, how can I improve my health now, what will I do, start doing? So these are the things which will create mental crisis in your mind, and it affects economically also, because you have to go to various hospitals to get your infection checked, ki what is there, why your immune system is very weak, what has happened to you, what is your hemoglobin count। so it will all affect you economically। so that is how we can say that कि जब आपको किसी तरह की डिजीज हो जाती है तो आपके यहाँ फिजिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, मेंटल क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस सारी कुछ हो जाता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेमेशन। सो इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी को देर इज ए पेन इन आवर टीथ, so there is inflammation in our gum area, when there is a pain in our ear, there is some inflammation in our ear area, back ear area। why? because this is the response of our immune system। immune system gives you signals, it gives you some symptoms that there is some problem, there is some infection in your body। so take proper care of your body, go and see the doctor। if you are not going and seeing to the doctor immediately, problem can enhance। ठीक है, अगर आप तुरंत नहीं जाते तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, प्रॉब्लम तो आपको और परेशान कर सकती है। सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ठीक, स्पेसिफिक मेथड क्या है प्रिवेंट करने का? इट इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन मेथड डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। एक किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट आपको कैसे प्रिवेंशन करना है? बाय गेटिंग इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन करना है उस पर्टिकुलर डिजीज का। जैसे कोरोना वायरस में अभी क्या करना है, हमें वैक्सीनेशन लेना है, विच इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन। जिससे ये बीमारी स्प्रेड हुई है उसी का माइल्ड फॉर्म लेते हैं, उसी का माइल्ड फॉर्म से हम वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस का ही माइल्ड फॉर्म, माइल्ड सेल्स लिया जाएगा और उसको फिर लैब में जाके उसकी वैक्सीन बनाई जाएगी। और वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसको बहुत लोगों के ऊपर चेक करके देखना पड़ता है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। एक लोग या 10 लोगों पे नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी स्टार्टेड विथ एनिमल, कि अगर कुछ भी हो भी जाता है तो ह्यूमन लाइफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट इज ट्राइड ऑन ह्यूमन बॉडी।
तो इसके बाद इसके लिए बहुत सारे सैंपल लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये वैक्सीन बनने में टाइम लग रहा है. सो इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट टू मेक हिज या हर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर डिजीज. जैसे ही आपने उसको ले लिया उसका माइल्ड फॉर्म वैक्सीनेशन के फॉर्म में, तो आपकी बॉडी अब एंटीबॉडी बनाने लगेगी. एंटीबॉडी हमेशा जो बाहर का पैथोजेंस होता है उसके अगेंस्ट बनाता है हमारे बॉडी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम. एंटीबॉडी बना लिया यानी कि अब उसके साथ उसको क्या करने, लड़ने में बहुत हेल्प आएगी, तो आपके बॉडी में जो है फिर से ये डिजीज अब नहीं होगी. So if the disease will strike the host body with full vigor, full potential के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ भी अगर वो जो है वायरस अगर हमारे बॉडी पे अटैक करनी चाहेगी, the body will be able to protect itself because it has made antibody against that disease. So that is how we can be protected with the help of these antibodies. Antibodies बना कैसे, जब आपने वैक्सीन ले लिया. इसलिए जब एक बार किसी को चिकन पॉक्स होता है, उसका वैक्सीन ले लिया जाता है, तब तो होगा ही नहीं. अगर एक बार हो गया तो आपकी बॉडी ने क्या किया है, इट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट वायरस एंड व्हेनेवर इट विल ट्राई टू इन्वेड इन योर बॉडी अगेन, इट विल फाइट विद दैट. और इस वजह से भी हमें एक बार हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होता है. या इम्यूनाइजेशन करा लिया है तो फिर से नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या कर लिया है, एंटीबॉडी बना ली है. ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी, वाई एड्स इज कॉल्ड एज सिंड्रोम नॉट डिजीज. एड्स को सिंड्रोम नहीं कहते हैं, एड्स को डिजीज नहीं कहते, क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट मेक अप ए डिजीज. ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है जो एक बॉडी पार्ट को आपके इफेक्ट करेगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज इट अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम. और जब इम्यून सिस्टम में वीक हो जाएगा, छोटा सा घाव आपको महीनों में ठीक होगा, छोटी सी आपको अगर ब्लीडिंग कहीं से होने लग गई वो महीने में ठीक होगा, बुखार को इट विल टेक अ मंथ टू रिकवर. सो एड्स इज नॉट द डिजीज बट ए सेट ऑफ डिजीज. नॉट ऑल द पीपल हु डेवलप एड्स सफर फ्रॉम द सेम डिजीज, बट देयर आर सर्टेन अनयूजुअल इलनेस दैट अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन एड्स. बहुत सारे जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है एड्स से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने में, सारी बॉडी पार्ट्स को रिस्ट्राई करने में. लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम बहुत पुअर है वो जल्दी ही इससे क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं एंड दे लूज देयर लाइफ इन वेरी शॉर्ट टाइम. दैट इज व्हाई एड्स इज कॉल्ड एज सिंड्रोम बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर होल बॉडी, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में जब वीक हो जाएगा तो बॉडी की फाइटिंग, जो हमारा जब आर्मी डिफेंस सिस्टम, आर्मी एयरफोर्स जब वीक हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे कंट्री पे कोई किसी का भी इन्वेशन हो सकता है ना. इसी तरह से एड्स में भी यही होता है. अभी आपका जो है ये चैप्टर इसके साथ ही खत्म हो गया है. सो थैंक यू.